Such national events remind us of the struggles of our forefathers, evoke a national spirit within us, and help us in realizing our role towards the future development of our country. Moreover, healthy speech competitions are essential for students to boost their confidence. शामिल है। अगर इस मिट्टी में ईमान का बीज बोया जाए और इसकी आबियारी इल्म से की जाए तो एक ऐसी नस्ल वजूद में आती है जो माशरे में इनकलाब का सबब बनती है। हमारा मिट्टी से और मिट्टी का यकीन से रिश्ता बहुत पुराना है। इस मिट्टी में उम्मीद भी है, मायूसी भी, आसाइश भी है, तंगदस्ती भी, इजहार भी है, खामोशी भी, इनकार भी है, रजामंदी भी। इस मिट्टी में सब रंग छुपे हैं। इस मिट्टी से मुराद हमारी सोचें हैं। जब हमारी सोचें नम होती तो हमारी सोचें जरखेज होती हैं। उम्मीद और लगन से आगे बढ़ने की चाह हमें उस मकाम तक पहुंचा सकती है जिसकी हमें जुस्तजू रही। इसीलिए इकबाल कहता है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी। जनाब सदर, जब ये मिट्टी सरखेज होती है तो इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने वाली अरफा करीम पैदा होती है। जब ये मिट्टी सरखेज होती है तो माउंट एवरेस्ट पार करने वाली समीना बेग पैदा होती है। और जब ये मिट्टी नम होती तो एहसास मोहब्बत, जज्बा हुब्बुल वतनी और वफा देती है। जनाब सदर, जब मैं मुखालिफिन की आंखों में आंखें डालकर राशिद, मिनास और निशान हैदर पाने बहादुरों का सोचती हूँ तो फिर मुझे ये कहना पड़ता है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी। जनाब सदर, फिर जमाने ने देखा, चश्मा कुदरत ने मुशाहिदा किया कि नाउमीदी के अंधेरे छट गए, सन्ने हाथ उठ खड़े हुए। यही गैरत की आवाज थी, यही फितरत का तकाजा था, यही इकबाल के आंसुओं का समर था कि देखते देखते पाकिस्तान ख्वाब से उभरकर ताबीर में ढल गया और वक्त की किश्ते वीरा फितरत से महक उठी। जनाब सदर, इकबाल ने अपनी तमाम उम्मीदें नौजवान नस्ल से वाबस्ता कर रखी थी, जो हालात के गुलाम ना हो, जिनके बाजुओं में कुव्वते हैदर हो, जिनके दिलों में रूमी और गजली के जज्बात मचल रहे हों, जिनके हौसले बुलंद हों। इसी उम्मीद से हम दुनिया का हर मैदान फतह कर सकते हैं। इसीलिए कहता है, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। जनाब सदर, साहिल उफ्तादा गरचे बसी ज़ीस्तुम। साहिल उफ्तादा से मुराद एक बेजान साहिल है जिसमें कोई लहर ना हो, जो हरकत में ना हो। गरचे बसी ज़ीस्तुम हेज ना मालूम शद, कहने लगा आ के मन केस्तुम, कि मुझे अभी पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ, मेरी मंजिल क्या है, मेरा मकसद क्या है। फिर जॉन एलिया साहब कहते हैं, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही एक लड़का सा मैं निकल आया। लड़के से मुराद नौजवान नस्ल है, यानी मैं और आप सब। हम सब के अंदर ये लहर उठती है कि हमें कुछ करना है, हमें इस दुनिया में अपना मकाम पैदा करना है, जिसकी उम्मीद डॉक्टर इलामा इकबाल ने हम सब से वाबस्ता कर रखी थी। मौजजी खुद रफ्ताई तेज, ये लहर कैसी थी? ये लहर बहुत तेज थी। खरामा जल्दी जल्दी चलते चलते वागुफत, कहने लगी, हस्तुम गर्मी रवैम, अगर मैं चलूं, अगर मैं उठूं, अगर मैं हरकत करूं तो मैं सब कुछ कर सकती हूं। गर ना रवैम नेस्तुम, अगर मैं ना उठूं, अगर मैं ना चलूं तो मैं कुछ नहीं। तो मेरे राइम के हम साथियों, हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को नम करें, अपने दर पे दस्तक दें, ताकि इस वतन की जरखेजी का सबब बने। तो जरखेज हुई, कई नौजवानों ने अपने सर कलम करवाए तो जरखेज हुई, कई माँओं, बहनों और बेटियों के सामने उनके नौजवानों के बाजू काटे गए तो जरखेज हुई। ये मिट्टी वो मिट्टी है कि जिसकी आज़ादी में इस वतन के सुपूतों का टपकता एक एक लहू का कतरा शामिल है, और ये नवीद शामिल है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मगर ठहरिए सदर आली वकार, कि 14 अगस्त 1947 से कबल का मंजर देखिए। हर समत जुल्मो बर्बरियत का राज है, गुलामी की तारीकी हर समत फैल चुकी है।
मगर ऐसे में दूसरी जानिब मेरे आबा व अजदाद की आंखों में आज़ादी की रोशनी उजागर है और इसी आज़ादी की रोशनी ने इन्हें आगे बढ़ाया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ चलते चलते एक नया वतन हासिल कर दिखाया और ये नवीद दी कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कि सदर अली वकार जब इस मिट्टी से कहा गया कि ये बांझ है और ये सबूत नहीं उगल सकती तो ऐसे में कई हसन सिद्दीकी पैदा हुए और भारत के अभिनंदन को चाय का कप पिलाकर वापस रवाना किया और इस बात की नवीद दी कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और सदर अली वकार जब दुश्मन इल्म की शम्माएं बुझाने आए तो ऐसे में हम बने तो ताहिरा काजी बने, हम बने तो एतजाज एहसन बने और ये नवीद दी कि अरे गोली इन बच्चों पर क्या चलाते हो, हिम्मत है तो जरा ये गोली हमारे सीने पर चलाओ। और ये नवीद दी कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और सदर अली वकार जब कहा गया कि पाकिस्तानी खवातीन कुछ नहीं, अरे ये कुछ नहीं कर सकती तो ऐसे में हम बने तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना बने, हम बने तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बने, हम बने तो इस मुल्क की बेटी परवीन शाकिर बने। और ये नवीद दी कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और क्यों ना हो कि जब हम अदब के मैदान में उठे तो अल्लामा इकबाल बने, जब हम खेल के मैदान में उठे तो शाहिद आफरीदी बने, अरे जब हम पाकिस्तानी फलसफे के मैदान में उठे तो हम मशहूर फलसफी वलीद अहमद खान बन गए, और जब हम तालीमी मैदान में उठे तो हम अली मुइन नवाजिश बन गए और कई मज़ामीन में A1 ग्रेड ला कर दिखाया। और सदर अली वकार यही दूसरी जानिब जब हम पाकिस्तानी अफवाज की मानिंद उभरे तो हम इस दुनिया की बेहतरीन फौज बन गए और अपने वतन की खातिर जान कुर्बान करने से भी दरेग न किया। अरे हम उड़ती फिजा में राशिद मिन्हास बने, हम बने तो इस मुल्क की आन बान शान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने, क्योंकि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इकबाल ने हमारे लिए देखा था। क्या आज हम एक अमन पसंद और शाइस्ता मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं? अली वकार अफसोस, सद अफसोस कि ऐसा हरगिज नहीं। आज हम इकबाल के ख्वाब को रुसवा कर चुके हैं। मगर ये बात ना भूलें, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अली वकार, जब मैं इकबाल के इन अशार को सुनता हूँ तो ऐसे महसूस करता हूँ कि जैसे कोई दाना हकीम हमारे माशरे की नब्ज पकड़े उसकी बीमारी की तशखीस कर चुका है। जनाबे वाला, किसी भी चीज़ को सुधारने से पहले उसकी खामियों को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इस माशरे की चंद बुराइयों पर रोशनी डालते हैं। जनाबे वाला, ये निज़ाम कायनात अज़ल से चल रहा है और ता क़यामत चलता रहेगा। ये माशरा फिस्को फजूर से खाली था और हमने ये सुना था कि जब भर जाएगा तो कयामत आएगी। अली वकार, ना जाने आप और मैं किस कयामत का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ दीन और मजहब के नाम पर इक्तिदार की हवस में भाई भाई का गला काट रहा है, दहशतगर्दी और गैर मुल्की अनासिर का प्रोपागंडा करके हमारी माँ बहनों बेटियों को रुसवा किया जा रहा है। अरे मैं कहता हूँ कि आज जिस दरिंदगी का मुजाहिरा इज्जत और नामूस के साथ किया जा रहा है, बेहतर वही था कि इन्हें पैदा होते ही जिंदा दरगोर किया जाता था। जनाबे वाला, इस आलूदा माशरे से इंसान कैसे मायूस ना हो, कैसे हम अपनी बेबसी का मातम ना करें जब इज्जत के रखवाले खुद डाके डालें, जब आदम बार बार गंदुम के दाने खाता रहे तो कैसे इन अंधेरी रातों में हम रोशनी के चिराग जलाएंगे। जनाबे वाला, हमें मायूसी के जाल ने ऐसे जकड़ लिया है कि हम सब ने अब सुनहरे ख्वाब देखना छोड़ दिए हैं। मगर इन सब के दरमियान हमारे पास एक आस है, एक तहरीक है कि सब ठीक हो सकता है, सब ठीक होगा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अजीज़ान मोहतरम, अब आइए अपनी आंखों से मनफियत का चश्मा उतार कर इस माशरे के मुस्बत पहलुओं पर नजर डालते हैं। ये वो जरखेज मट्टी है जिसने ऐसे हीरो को जन्मा है जिनकी चमक ने तमाम जहां की आंखों को हीरा कर दिया था। इस बात में कोई शक नहीं कि ये मट्टी बेहद जरखेज है। जरूरत है तो बस
نمی کی، وہ نمی جو ماضی میں کبھی عیدی بن کر لاوارث لاشوں کو غسل دیتی رہی، یتیم بچوں کو چھت اور بنا رنگ نسل مذہب ذات دیکھے بھوکوں کو کھانا کھلاتی رہی، تو کبھی عبدالسلام بن کر جو طبیعت کے میدان میں نوبل پرائز لے کر پاکستان کا نام فخر سے روشن کرتے رہے، تو کبھی حبیب جالب بن کر جو اپنی انقلابی شاعری سے عمریت، مارشل لاء اور ریاستی جبر جیسے ناصوروں کے خلاف کھڑے رہے۔ جناب والا، یہ تمام چہرے اس زمین کی زرخیزی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ وہ مثالیں ہیں جنہوں نے ملک و ملت کے نام اپنی زندگی کر کے اس کے چمن کو سبز رکھا ہے۔ ان کی کاوشیں اور ان کی محنتیں اس جہان کو چیخ چیخ کے بتاتی ہیں کہ سنو، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ جناب والا، ہمیں ضرورت ہے ایمان کی، ہمیں ضرورت ہے اتحاد کی، ہمیں ضرورت ہے تنظیم کی۔ مانا کہ آج ملک کے حالات ایک تابناک مستقبل کی عکاسی نہیں کرتے، مگر اقبال کے یہ امید افزا الفاظ بے بسی اور لاچاری کے گھٹا توپ اندھیروں کو چیرتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج اگر ہم ایک ہو جائیں اس ملک کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے اپنی ذات سے بڑھ کر کریں تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان بلندیوں کو چھوئے گا۔ جناب والا، اپنی تقریر کا اختتام اس امید کے ساتھ کروں گا کہ گھبرائیں حوادث سے کیا، ہم جینے کے سہارے نکلیں گے، ڈوبے گا اگر یہ سورج بھی تو چاند ستارے نکلیں گے، انداز زمانہ کہتا ہے پھر موج ہوا رخ بدلے گی، انداز زمانہ کہتا ہے پھر موج ہوا رخ بدلے گی، انگاروں سے گل پھوٹیں گے، شبنم سے شرارے نکلیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ شوق سے مصنف، عادت سے مقرر اور پیشے سے صحافی ہوں۔ صدر علی وقار، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں یہ کوئی عام موضوع نہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ان ہواؤں سے کہہ دیجئے کہ کچھ دیر کے لیے ذرا تھم جائیں اور کہیں اور جا کے اپنا بسیرا کریں، کیونکہ آج اس ایوان میں میں صرف تقریر کرنے نہیں بلکہ ان معصوم بچوں کی عکاسی کرنے آیا ہوں کہ جنہوں نے اس وطن کی خاطر اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ جی ہاں صدر علی وقار، میں بات کرنے لگا ہوں ان درد سے معطر فضاؤں کی، میں بات کرنے لگا ہوں اپنی وطن کی ماؤں کی، میں بات کرنے لگا ہوں ان بہنوں کی رداؤں کی، میں بات کرنے لگا ہوں ان بیٹیوں کی دعاؤں کی۔ صدر علی وقار، ذرا یاد کیجئے اس منظر کو کہ جب 14 اگست 1947 رات 11:50 پر ریڈیو سے آواز آتی ہے کہ یہ آل انڈیا لاہور ہے، ہمارے اگلے پیغام کا انتظار کیجئے۔ صدر علی وقار، وقت کا کانٹا چل رہا ہے، مسلمانوں کا دل مچل رہا ہے، اور پھر اسی ریڈیو سے ٹھیک 12:05 پر غلام مصطفیٰ ہمدانی صاحب کی احساس و جذبات سے لبریز آواز گونجتی ہے کہ یہ آل انڈیا لاہور نہیں بلکہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، آپ سب کو پاکستان مبارک ہو۔ صدر علی وقار، جب میں قیام پاکستان کے واقعات کو پڑھتا ہوں، جی ہاں جب میں قیام پاکستان کے واقعات کو پڑھتا ہوں تو ایک سوال میرے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ کس طرح اس وطن کا نوجوان اتنا بہادر ہے، کس طرح ہماری فوج دنیا کی عظیم ترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے۔ صدر علی وقار، اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں پاکستان کے کونے کونے میں جاتا ہوں مگر مجھے اس کا جواب نہیں ملا، تو میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 1400 سال قبل ہمارے پیارے نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے اصحاب کی تربیت فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، جنگ سے قبل ان کی تربیت فرما رہے ہیں، انہیں جنگ کے تمام طریقے بتا رہے ہیں، انہیں شہادت کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ جی ہاں صدر علی وقار، جب میں بدر کے میدان میں پہنچتا ہوں تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہم 313 ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، مگر ہم ڈرے نہیں، ہم رکے نہیں۔ صدر علی وقار، نہ ہمارے پاس ساز و سامان تھا، نہ ہمارے پاس گھوڑے تھے، نہ ہاتھی تھے، نہ ہمارے پاس جنگ کا ساز و سامان تھا، ہمارے پاس تھا تو فقط مضبوط ایمان تھا۔ صدر علی وقار، جب میں کربلا کی سرزمین پر پہنچتا ہوں تو میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں، ہم صرف 72 ہیں، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، لیکن وہ جذبہ حسینی دیکھیے کہ اصغر سے لے کر عباس تک ہم رک نہیں رہے، ہم ڈر نہیں رہے، ہم بک نہیں رہے، بلکہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا۔
सदर अली वकार से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत जरा एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत जरा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयदा अबीहा इकबाल है और मेरा ताल्लुक़ इकरा यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट कैंपस से है। जनाबे वाला, मुझे आज जिस उन्वान पर लब कुशाई का मौका मिला है, वो उन्वान दरअसल मायूसी के खतादुन अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर, जिसके दूसरे मिसरे पर मेरी गुफ्तगू का दारो मदार है कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जनाबे सदर, आज के इस दौर में कि जहां मायूसी की आंधी ने हमारे यकीन को डामाडोल कर रखा है, ऐसे वक्त में कि जो हर रोज़ किसी न किसी सिम से हमें ऐसी खबर सुनाई दे जाती है कि हमारी आंखों में चमकती हुई उम्मीद की लौ मध्यम पड़ने लगती है, जनाबे वाला अबतरी और तबाही के किस्सों को तो इस तरह पेश किया जाता है कि गोया खैर तो रुखसत ही हो गई। ऐसे वक्त में जनाबे वाला ये शेर मुझे हिम्मत देता है। शायर मशरिक की उम्मीद अफ़ज़ा मेरी थकी हुई उम्मीद को जला बख्शती है। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से एक दिन नूर निकलेगा। जनाब सदर, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ये अल्फाज कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज़ है साकी। The flight must never be overshadowed. This August 14th is the 75th anniversary of our independence. The past 75 years have been crucial for Pakistan. We suffered many strokes. Conspiracies were devised to undo the glorious event of 1947. The governance was de-established and our economy was strangled. Although there is no power in the world that can undo Pakistan, said Qaid-e-Azam. Challenges are something that every country faces. But let's talk about what we have achieved in the last 75 years. From 1948, when Urdu was declared as the national language, to 1960, when Pakistan achieved its first gold medal in Olympics defeating India in hockey. Or from 1979, when Dr. Abdus Salam, a Pakistani scientist, was awarded with the Nobel Prize in Physics. 1988, when the world came to know that women like Benazir Bhutto are capable enough to run a country as Pakistan's first former woman prime minister. 2009, when JF-17 Thunder became the first ever multi-role state-of-the-art fighter aircraft manufactured by Pakistan. And 2021, when the first ever successful free-of-cost bone marrow transplant was done in GIMS Hospital in Gambat. Over 75 years, we have discovered gems that have contributed to the cause. To name a few, Abdul Sattar Idi Saab, who once said, "No religion is higher than humanity." Dr. Ruth Wao, the founder of Leprosy Center, Ramzan Chipa, the founder of Chipa Welfare Association, and Ansar Barni, the founder of Ansar Barni Trust International. A few poets like Sayyid Imtiaz Ali Taj, Faiz Ahmad Faiz, Rasool Baksh Palijo, John Elia, and Parveen Shakir have not only created magic with their writings, but have contributed in the international recognition of Pakistan. To say there's a lot we have achieved in the last 75 years, and these were a few of the important achievements that I highlighted. Although it's disheartening to see how many challenges our country is facing. To name a few, poverty, terrorism, unemployment, youth dissatisfaction, resource mismanagement, and corruption. Almost 80% of Pakistanis are thought to live on less than US dollars 5.50 a day, what the World Bank defines as the poverty line for upper middle income countries. The only things we have left are unity, hard work, and steadfast faith. We must protect our land from all of these calamities. United we stand, divided we fall. Today, simply chanting slogans is insufficient. Peace and stability bring economic development. Therefore, the think tanks must now analyze our weak policies regarding the war on terror.
Accelerating educational development and strengthening the democratic process will yield more than what we expect to be done in the coming years. Let's stand against injustice, ignorance, anarchy, poverty, corruption, and unemployment. Let's work, unite, and turn into a solid, sublime entity that embitters and spoils every nefarious tactic of our faithless foes. The learned Khalifa, Hazrat Ali Raja Ta'ala Anhu once said, "Nothing can cause nations to flourish like justice." And let me assure you, we are here and we will be here as an independent land, even after 1,000 conspiracies. The respected audience here, we might face many challenges, but remember what Iqbal said. Failure is not fatal until we surrender. Failure is not until we surrender. Trying again is the key to glorious victory. Thank you. I am Minahil Iqbal from Iqra University North Campus. Today, I'm going to talk about 75 years of freedom, struggles, and achievements. Benjamin Franklin once said, "They who give up an essential liberty for temporary security deserves neither liberty or security." Now, just for a moment, imagine yourself in captivity, being deprived of the fundamental right of freedom. You wanted to express your views, but no one's granting you the freedom to speak. What if you're given a set of orders and dictations, being oppressed, and are subject to decisions taken without your consent? That sounds quite horrible, isn't it? As no one would ever prefer a life without freedom. Nowadays, liberty and freedom are considered to be an unavoidable part of our lifestyle. But there was a different scenario for a 9-year-old boy who used to live in a small cottage along with his family. He had ample of dreams and a passion for higher education. Unfortunately, he could not pursue his dreams, as his family was considered a minority in that town. For this reason, they did not have the freedom to live their lives according to their will. However, years passed. The boy grew up and began to demand liberty from oppression. The desire for freedom was so powerful that he was ready to put his life on stake for it. As time went on, the boy became even more influential and persuasive. At last, his aspiration led him to achieve freedom for his family. Similarly, the constant and consistent efforts of many eminent personalities, including Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal, Maulana Muhammad Ali Johar, Maulana Shaukat Ali, and thousands of people played a key role in order to attain freedom for our nation. This led to the phenomenal creation of a country named Pakistan. This independence was indeed a crucial one, and the struggle does not end here. How could we overlook the major issues that Pakistan faced as a nation state? The issue of princely states of Junagadh and Kashmir, Indus Water Treaty, suppression of East Pakistan, accommodation of refugees, and many other major issues. Despite all this, Alhamdulillah, we discovered a journey of 75 years by determination, and inshallah, we will achieve more. As George Washington said, "For liberty, when it begins to take root, is a plant of rapid growth." Now just spare a moment and think, how are we assisting our nation? Have you ever thought how this your existence impacts the country? Thousands of people sacrifice their lives, abandon their possessions. Their physical and mental health was completely deteriorated. Although then they were ready to confront the challenges in order to achieve freedom for our nation. And so they did. Don't you think now we should shoulder the responsibility of the gradual evolution and advancement of our country?
by the practical implementation of sustainable development goals, adhering to our moral values, protecting the minorities, and adorning our culture. As Nelson Mandela expressed his words, for to be free is not merely to cast off one's chain, but to live in a way that will weightlifting or sport. Art is and will always remain an achievement which has a shared level of order, whether it be Ustad Nusrat Fateh Ali Khan or the Shahid but I'm leaning towards an ounce of humanity that we have in each and every one of us. It's in the ethnic groups of Punjabi, Neelam, Pathan, Sindhi, Saraiki. It's in the religious majority minorities. It's in the hearts of people like Selan, Elisa, and many other wonderful human beings who have devoted their entire lives for us. On that subject only, I would like to briefly talk about, and I quote the angel of blessing in Pakistan, Ruth Vow, a woman, a nun, a physician who spent more than 50 years of her life in Pakistan fighting leprosy. She managed to build about 155 clinics all over Pakistan, and by 1996, WHO had declared Pakistan the first country in its region to have controlled this monstrosity. The monstrosity is so severe, so vicious that one's own family members would cut ties with it. A woman in the prime, on her way to India, stops in Karachi, the west of this country. Moreover, anecdote, a famous British author in 2011. Moment of 14th August. I was brought up to believe that the story of Pakistan, its struggles and its achievement, is a very story of great human ideals struggling to survive in the face of great odds and difficulties. I want to take you to the older times, 75 years back, when Pakistan was only an idea circulating against among the Muslims of subcontinent. But it was only united efforts and faith in our destiny that we were able to translate Pakistan of our dreams into reality. Abu Salman Dr. Sahab shared his memory of that ecstatic night of 13th August 1947 when the independence of Pakistan was announced. On which Sayyida Siddiqui and Many others also describe their extreme hunger from the days of perilous travel without food and water. Now, these were just the stories of some people who actually made into Pakistan. There were a total of 7 million Pakistanis, or 7 million people who migrated from India to Pakistan, but only around 5 million people actually made into Pakistan. The story of other 2 million is rather horrible, emotional, and terrifying. Tell your kids of this generation how they woke needing coffees but discovered instead dead bodies around their morning paper. Waterlogged families of their sisters, spouses, daughters, brothers, and small children. Tell them they were too late coming. Admit, even in the year we leased freedom, we didn't own it outright, yet they pawed at the weak folds. They wiped their eyes, laced caskets with flags, evacuated the crime scene, caterwauled in the stream, and laid their bodies against the outlines, against the graves of their fallen, and cried, "Of course, you mattered." People actually wept 75 years back. They said, "The wounds will never heal." In the same year, they were ready. The year they lost their inhibition and moved with courageous abandon was also the year they cried, they died of hunger, looked in the eyes of transgressors, and continued. They said, "In every chaos, there is a cosmos, and in every disorder, there is a secret order." There was no constitution, no economic backup, water crisis, defense issues, poverty, hunger, illiteracy, a lot of things. Political instability, and between all of that, demise of Muhammad Ali Jinnah broke the back of Pakistan. But the spirits were too high. We didn't back out. In 1947, we established the University of Sindh in the modern Pakistan. We were the first Islamic nuclear power. We carved our armed forces in such a way we stand in 9th largest and strongest in the entire world. 1948, we established a state bank. 1956, the constitution was made that made Pakistan Islamic Republic. 1960, we won gold medal defeating India in hockey.
1979, our eminent scientist Dr. Abdus Salam was awarded with Physics a Nobel Prize. 1987, John Sher Khan won World Open Squash Championship. 1988, Benazir Bhutto was elected as the first lady prime minister. 1992, we won World Cup defeating England by 22 runs. 2012, Sharmeen Obaid Chinoy was the first Pakistani to get Oscar award. 2020, Lieutenant General Nigar Johar was made first female 3-star general. Imran Khan inaugurated BRT system. The reason for telling you all this is they keep falling and failing, but they never stopped. They stood there with the moment drawn on their face like a dagger and flung it back at itself, slicing space for us. They lived in spite of crooked odds. They were brave and always in the company of courage. We were born just in time to lead. Thank you. The most beneficent and the most merciful, honorable judges, respected professors, event organizers, administrators, media crew, and my worthy fellow beings. Hello, Assalamu alaikum, and a very great afternoon to you all. Today is August 10th, 2022, and I, Shabir Zaira, has received an honor of sharing my few thoughts on Independence Day. Before moving forward, let me share my topic. The topic of my speech is 75 years of freedom, struggles, and achievements. Before moving forward, I would like to share a very inspiring quote of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, which is, I don't believe in taking a right decision. I take a decision and make it right. As you all know that the Independence Day is just around the corner, and this 14 August marks the 75th Independence Day of Pakistan. Just for a moment, I want to take you all back to 1947, when our great-grandparents and ancestors migrated to this beautiful land, leaving everything behind. My brothers and sisters, my judges, my professors, it was not an easy job. None of us can truly feel what they went through. But just to give you a picture, there were so many children killed in front of their mothers. There were so many virtuous women jumped into wells and canals, casted their lives just for the sake of our independence. There were so many people burnt inside their houses alive. And lastly, there were so many children who became orphaned the entire life. The dedication of Mr. Muhammad Ali Jinnah and the unity of Muslims paved the creation of this country. And Alhamdulillah, by the grace of Almighty, Pakistan was successfully able to appear on the world map. My dear audience, my country Pakistan is tremendously blessed, and I am sure not many of you have realized how lucky we are to be a citizen of Pakistan. Nature has gifted Pakistan with countless and endless blessings. It has abundance of streams, lakes, rivers, which increase the irrigation of the land. It has a cream of skillful, ambitious, and lusty youth. When we talk about the resources such as cotton, rice, fruits, vegetables, they are not just grown in Pakistan, but they are exported as well. When we talk about the international relations, Pakistan is taking part in international affairs, seeking cultural and trading relationships. Now let's talk about achievements, talents, uniqueness, and standing out. My dear audience, my judges, and my professors, I am 110% sure Pakistan has never failed me, neither you, in standing proud in front of this whole world. And especially all those who delivered the speeches. It was well articulated and full of
Savera Irshad Hussain. And third prize goes to Shonmi Salim. अच्छा इंग्लिश के भी मैं अभी सुना दूं जी अच्छा जी फर्स्ट सैयदा अबीहा इकबाल मोहम्मद ताहा आसिफ Okay, he'll also get 30,000. The second prize goes to Sara Siddiq. She will get 20,000 rupees. And the third prize goes to Shabih Zahra. She will get 15,000, right? घर जाने दीजिएगा. Second prize goes to Savera Irshad Hussain, and she will get 20,000 rupees. And the third prize goes to Shonmi Salim. She'll get 15,000 rupees. Okay, 30,000 rupees. चलें जी और Sayyida Abiha Iqbal, first prize winner, she will be given 30,000 इनके जो